Welcome everyone. Today's lecture will discuss 10 important questions collected from different competitive exams. This very interesting question is picked from one of the competitive exam जहाँ पर हमें गिवन था कि पिंक एंगल जो है वो 70 डिग्री है, ग्रीन एंगल 30 डिग्री है और इस डाटा को यूज़ करके हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा. I will suggest you pause the video and try out the question yourself. जो solution का पहला step है वो थोड़ा सा tricky है. After that solution is very easy. चलिए जी solution check करते हैं. यहाँ पर जो है we have to do a small construction that is you join EB here. Now if you look this 30 degree angle, ये 30 degree angle जो है is subtended by this arc AB. तो आर्क ए बी जो है सर्कमफ्रेंस पे इट्स सबस्टेंडिंग दिस 30 डिग्री एंगल एंड बाय थ्योरम दिस आर्क ए बी विल सबस्टेंड सेम 30 डिग्री एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेगमेंट ऑल्सो. तो ये जो आर्क ए बी है ये पॉइंट ई पर यहाँ पर कितना एंगल सबस्टेंड करेगा. सो दिस एंगल विल बी सेम एज दिस ग्रीन एंगल दैट इज इट विल बी 30 डिग्रीज. अब अगर हम इस ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करेंगे, ये जो पिंक ट्राइंगल है हमारे पास, उस पिंक ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में ये जो एंगल है दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल एंड बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वी नो दिस एंगल विल बी अल्फा प्लस 30 डिग्रीज. नाउ द लास्ट पार्ट, लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस क्वाड्रिलेटरल BCDE. इसके सारे वर्टेक्स जो हैं वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं. So it is a cyclic quadrilateral and we know cyclic quadrilateral में जो opposite angles हैं they are always supplementary and thus alpha plus 30 plus 70 this sum will be equals to 180. इसको simplify करेंगे, alpha plus 100 is 180. Solving it will get alpha is 80 degrees and that's our answer. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहां पर हमें एक क्वाड्रेंट गिवन है दैट इज सेक्टर विद एंगल 90 डिग्री और हमें फाइंड करना है कि इसके सर्कमफ्रेंस पे रैंडमली अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वर्टेक्स से ज्वाइन करने पर ये जो एंगल बनेगा इसकी वैल्यू कितनी होगी. दैट इज वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस पिंक एंगल और अल्फा डिग्री. ये जो अल्फा है ये इसके सर्कमफ्रेंस पे कहीं पर भी बन सकता है और उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी which we have to find. ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट के साइज को रिड्यूस करते हैं ताकि इस क्वाड्रेंट से हम एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर सके. तो यहां पर सबसे पहले हम इस क्वाड्रेंट के सर्कल को जो है कंप्लीट करते हैं. नाउ दिस सर्कल इज देयर विद सेंटर O और अगर आप देखेंगे पॉइंट C एंड A, तो ये जो AC आर्क है ये सेंटर पे जो है इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेगमेंट एनीवेयर इन दिस सेगमेंट ये जो AC आर्क है दिस विल मेक अ एंगल विच विल बी हाफ ऑफ 90 डिग्री दैट इज दिस एंगल हियर दिस विल बी 45 डिग्रीज. अब ध्यान से देखेंगे तो CBA and this point these are forming a cyclic quadrilateral and by theorem cyclic quadrilateral में जो opposite angles हैं उनका sum जो है वो supplementary होता है that is alpha plus 45 degree that will be 180 degrees. Solving it will get alpha as 135 degrees and that's our answer. इसी में अगर हम एक second solution check करें so यहाँ पर अगर आप carefully देखेंगे तो center में ये जो angle है this is 90 degree and जो remaining angle होगा this remaining angle will be 270 degree and by again same theorem we'll say angle at the center is 270 degree and thus the angle in the remaining part of the segment will be half of 270. So ये जो alpha है this will be 135 degree and that's our answer. This interesting question. Can you find value of angle alpha where given is AC and DE, they are parallel to each other, O is the center of the circle and angle DBC is 60 degrees.
We'll solve the question in two different ways. For our first approach, let's first use the data that AC is the diameter, and let's join AB here, as AC is the diameter and diameter always subtends angle of 90. So angle B, that's 90 degree, out of which this angle is 60 degree. Thus the remaining angle, that will be 30 degrees. Now if you look carefully, chord AD is subtending an angle of 30 degree at the circumference, and by theorem in the remaining part of the segment it will subtend same angle 30 degree, and thus this angle C here, that's nothing but 30 degrees. Now AC and DE are parallel lines, and DC, that's a transversal, and these two angles, these are alternate interior angle, and by theorem they should be equal, and thus alpha is 30 degrees, and that's our answer. Let's check the second approach. For our second approach, we'll use the fact that chord DC, it's subtending an angle of 60 degree at the circumference, and by theorem at the center it will subtend twice this angle. So for that, let's first draw DO here. Now chord DC at the circumference it's 60 degree, and thus at center it will subtend twice of this angle, or 120 degrees. Now DO and OC, these are the radius of circle, and thus these are equal. Or triangle DOC, it's an isosceles triangle, and thus we can say that these two angles will be equal, and by angle sum property they will be 30 degrees each. And AC and DE, these are parallel lines, DC is transversal, and this 30 degree and alpha, these are alternate interior angle, and by theorem they should be equal, and thus alpha is 30 degrees, and that's our answer. This interesting question, can you find value of angle alpha, where given is a cyclic pentagon with O as the center of circle and this green angle as 125 degree. I'll suggest you pause the video and try out the solution yourself. Let's check the solution. For that, let's join AD here. Now if we'll check A, B, C, D, all the four vertex are on the circle, and thus ABCD is a cyclic quadrilateral. We know that in cyclic quadrilateral, opposite angles are supplementary, and thus this angle here, it will be 180 minus 125, or this angle will be 55 degrees. Also AE is the diameter. We know that diameter always subtends an angle of 90 degree at the circumference, and thus this angle D here, this will be 90 degrees. And value of angle alpha, alpha will be nothing but 55 plus 90 degrees, or alpha will be 145 degree, and that's our answer. Okay, this question is very interesting, जहाँ पर हमें गिवन है दो कॉर्ड्स, ये रेड कलर की कॉर्ड्स जो हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर आउटसाइड द सर्कल एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं कॉर्ड और सर्कल के, दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 140 डिग्री एंड 30 डिग्री एट द सेंटर. एक्साइटिंग पार्ट इस डाटा से हमें वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा निकालना है. आई विल सजेस्ट यू पॉज द वीडियो एंड ट्राई आउट द क्वेश्चन बिफोर चेकिंग द सॉल्यूशन. Let's check the solution. We'll start by a simple construction, that's by joining AC here. अब हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो AB आर्क है, ये सेंटर पे 140 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, एंड बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम ये जो AB आर्क है, दिस विल सबटेंड एंगल हाफ ऑफ 140 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस. तो यहाँ पर ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ 140 और 70 डिग्रीज. सेम लॉजिक, ये जो DC आर्क है, ये सेंटर पे इट सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेगमेंट इट विल सबटेंड एन एंगल हाफ ऑफ 30 डिग्री. सो ये जो DC है एट पॉइंट A, तो यहाँ पर ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ 30 और 15 डिग्रीज. अब हम ध्यान से देखेंगे ये ट्राइंगल
ECA, इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है 70 डिग्री, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, एंड बाय एक्सटीरियर एंगल थियरम दिस एंगल 70 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे टू गेट वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा एज 55 डिग्री, एंड दैट्स आवर आंसर। और इन जनरल अगर हम बात करें, एनी क्वेश्चन वेयर टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर आउटसाइड द सर्कल, तो ये जो एंगल अल्फा है दिस कैन बी गिवन बाय हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज एंगल्स मेड एट द सेंटर। तो अल्फा जो है दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ y minus x. So this we can take it as a formula specially for our MCQ questions. Okay, this interesting question, we have got a chord length of 8 centimeter and this chord is subtending an angle of 45 degree at the circumference. Exciting part is with this limited data we have to find radius of this circle. Before solving it, I'll suggest you pause the video and try out the question yourself. Let's check the solution. Let's start by assuming the center of circle is point O and the radius of circle is r centimeter, and thus BO length that will also be r centimeter. Now this AB chord, it's subtending an angle of 45 degree at the circumference, and by inscribed angle theorem it will subtend twice of 45 degree at the center. So 2 times of 45 is 90 degree. So at the center it will subtend an angle of 90 degree. Now in triangle OAB, applying Pythagoras theorem, we'll get base square plus perpendicular square is hypotenuse square. So this is 2 times of r square is 64, r square that's 32. Simplifying it, we'll get r as 4 times of root 2 centimeter, and that's our answer. This interesting question, we have a cyclic hexagon with two of the angles as 120 degree and 130 degree. Exciting part is with this limited data we have to find value of angle alpha. Okay, we'll solve this question in two ways. हमारी first approach के लिए we are joining AD here. तो यहाँ पर जो है आपका ABCD, तो इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम लगाएंगे, दैट इज जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दे आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा दिस एंगल विल बी 180 माइनस 130 और 50 डिग्रीज। सेम वे में अगर हम क्वाड्रिलेटरल ADEF को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर जो अपोजिट एंगल्स हैं दैट इज दिस एंगल and this green angle, their sum will be 180 degree, and thus this angle will be 180 minus 120 or 60 degrees. And angle alpha which we had to find, that's nothing but 50 plus 60 or 110 degrees, and that's our answer. हमारी second approach के लिए we can use a theorem directly, that is in a circle with a even sided polygon inside it, the sum of alternate angles is always half the sum of total angle. तो यहाँ पर हमारे पास जो alternate angles हैं those are your that is alpha plus 130 plus 120. तो ये जो alternate angles का sum है this will be half the sum of all the angles. Hexagon में सभी angles का जो sum है that is 720, half of that will be 360. And on solving this we'll get alpha as 110 degrees, and that's our answer. This interesting question, O is the center of the circle and these two angles are given as 30 degrees and 100 degrees. Exciting part is with this given data we have to find value of angle alpha. Let's check the solution. If we'll consider this major arc DB, then this arc is subtending an angle of 100 degree at the circumference, and by inscribed angle theorem it will subscribe an angle at the center which will be twice of this 100 degree. So this angle at the center will be
200 degrees. Now AOB is a straight line, and thus this angle here, that will be 180, and therefore this remaining angle will be 200 minus 180 or 20 degrees. Now if we'll focus on this triangle ADO, now applying exterior angle theorem, alpha is the exterior angle and 30 and 20 are interior opposite angles. Thus alpha is equals to 30 plus 20 degree, or alpha is 50 degrees, and that's our answer. This interesting question, we have a cyclic pentagon inside a circle. इस पेंटागन में 3 of the sides they are equal to each other, and one of the angle is given as 140 degrees. Exciting part is, with this data we have to find value of angle alpha. Let's check this interesting solution. Let's start by assuming the center of circle as point O and the radius of circle as r centimeter, and thus OB length and OC length and OD length will be r centimeter each. Now let's check this triangle OBC and triangle OAB. So there the length AB and BC are equal, it's given, and the other lengths they are r centimeter each. Thus by side these two triangles are congruent to each other, and therefore these two angles will be equal, and this angle will be 65 degrees each. Now this yellow triangle, the sides length are r and r, it's an isosceles triangle, thus this angle will be same as 65 degrees. And by angle sum property, this angle here, that will be 180 minus 130 or 50 degrees. Now in circle we have property theorem that equal chords subtend equal angle at the center. So यहाँ पर सर्कल में ये जो chord length AB और BC हैं और CD हैं, they are equal in length, and thus the angle subtended by them at the center will be equal. तो BC chord जो है वो सर्कल में यहाँ पर it's subtending this angle here, so this will be 50 degrees. CD chord, it's subtending this angle at the center, and this will be 50 degrees. Now if you look at this arc AD, ये जो आर्क AD है, सेंटर में इट्स सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 150 डिग्रीज, एंड बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम इट विल सबटेंड हाफ ऑफ दिस एंगल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेगमेंट. तो यहाँ पर पॉइंट E पर जो है इट विल सबटेंड हाफ ऑफ 150 डिग्रीज और 75 डिग्रीज, एंड दैट्स आवर आंसर. This interesting question given to us is a circle with center O and a cyclic quadrilateral inside it with two of its sides equal to each other. One of its angle is given as 40 degree. Exciting part is to find value of angle alpha. Let's check the solution. Here this quadrilateral ABCD, all the vertex are lying on the circle, thus it's a cyclic quadrilateral. So we'll apply cyclic quadrilateral theorem here, that is sum of opposite angles are supplementary. So here opposite angle to this angle B is angle D, and this angle D here, that will be 180 minus 40 or 140 degrees. Let's join CA here. Now AB is the diameter, and we know diameter always subtends an angle of 90 degree. So angle C will be 90 degree. And applying angle sum property in triangle ABC, so this remaining angle here, that will be 180 minus 90 minus 40, or it will be 50 degrees. Now this triangle ADC, here AD and DC are equal, so it's an isosceles triangle, and thus these opposite angles will be equal, and by angle sum property they will be 20 degrees each, and value of angle alpha, that will be 50 plus 20 or 70 degree, and that's our answer. I hope you enjoyed all the 10 questions and gained substantially from this video. I will see you in next video.
Till then, tata, bye bye.